Hi guys, welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में I'll be sharing with you guys my thoughts and my total review of a very beautiful sneaker that I gifted to myself on my birthday. If you've watched my birthday haul, you must have seen that sneaker in that particular video. If you're planning to buy this particular sneaker, this video is for you guys. So yes, without much blabbering, chalo, let's quickly get started with today's video. And if you're wondering what's up with the flowers, it's my birthday flowers. My birthday haul ही shoot करी थी, so I thought I'll just make a video for you guys if you're planning to purchase this very particular sneaker. So ये sneaker जो मैंने लिया है, it's actually from Nike and I got it from Myntra. ये काफी similar है to Nike Dunks and mind you that is around 10, 11, 12,000 rupees. अगर इस सेलर से आप ले रहे हो around 25,000 का हो जाएगा, but आपको मिंत्रा पे भी अभी आराम से डंक्स मिल जाता है. Just verify that it's actually authentic and original and not a fake one. I was actually planning to buy Nike Dunks for myself. काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि Nike Dunks बहुत easily crease हो जा रहे हैं. So I was like 10,000 खर्च कर रही हूँ और ढंग से मैं पहन भी ना पाऊँ, आराम से crease आ जाएंगे. This is not something that I wanted. I wanted something that I can wear easily without worrying about having creases. Sneaker का ये problem है, especially leather वाले sneakers. So for a very long time, ठीक है, 4-5 साल हो चुके हैं, I've stopped buying leather वाले sneaker, full leather वाले sneakers. Every shoe or every sneaker that I'm buying, it's of fabric cloth material, ताकि वो मेरे सर पे वो टेंशन ही नहीं रहेगा कि crease होने वाला है, because it's fabric. So इसी वजह से I've chosen this particular shoe. Looks very similar to Dunks and again it's from Nike. So this is the Nike SD Eleob women's skate shoe and it retails for 6,295 rupees. जब मैंने ये खरीदा था, it was around 4,000 rupees, which was actually a very nice deal. इसी वजह से मैंने ले लिया, and also because it was of fabric material, so I do not have to worry about it getting creased so easily. I can just literally wear it without any worries, come back, just wash it, clean it, and then keep it nicely. So this is what the beautiful sneaker that I got looks like. It's so beautiful. Look at that color. I freaking love the color because मैं हमेशा white ही लेती हूँ ना. I really wanted some colored shoes and something that I can actually wear it and it's easily wearable. This color right here is easily wearable. I can literally wear this with any of my outfits without worrying about it not matching with my outfit. So this is what the beautiful sneaker looks like. I freaking love it. It looks so cute. Let's go ahead and unbox this. मैंने मंगवाया है in the size UK 6. As of now, this right here is out of stock. You guys can see it's out of stock. मैंने काफी बार देखा है कि ये out of stock हो ही जा रहा था, but with time ये आराम से in stock भी हो जा रहा था. So this is what I have ordered. I have received this in a huge box like this. काफी बड़ा डिब्बे में मुझे receive हुआ है. And when I open this up, this is again how I received the shoes. काफी सुंदर packaging है. So I never throw out the dabbas. Do not throw the cardboard box. Keep your shoes inside their original packaging. So this is what the beautiful dabba looks like. I love the color. It looks so nice. And when I go ahead and open this up, this is what the beautiful shoes look like. I freaking love it. It's just on point for 4,000 rupees. मुझे 4,000 rupees का ये पड़ा and I just cannot be any more happy because for 4,000 rupees ये पैसा वसूल वाला sneaker है. I love how beautiful it looks. The color palette right here is just so gorgeous. अगर आपको ये लग रहा है कि I can't pair this with everything, you're wrong. I can easily go ahead and pair this with everything that I have in my wardrobe. For my skirts, to my trouser, my dresses, my jeans, सबके साथ चल जाएगा and it is easily the most wearable color palette, colored वाले sneakers that I have and I literally look so good. So this is what the beautiful sneaker looks like. एक हल्का सा मेरा complaint है कि ये हल्का सा flat है for my feet. अगर और ऊंचा हो जाता ना तो 10 out of 10 देती, but right now I'm giving it 9.5 out of 10. From the looks to the quality and everything, it looks so nice. But ये हल्का सा मेरे पैरों के लिए हल्का सा flat है. But apart from that, I do not have any issues. It looks so nice, is very comfortable and is surely a compliment fetcher. So if you have Dunks in mind, if you're planning to buy Dunks, trust me, it's not worth it क्योंकि
इजीली क्रेज हो जाता है। अगर आप 10,000 का जूते ले रहे हो, आप चाहोगे ना काफी टाइम तक आप पहनो, सो इट जस्ट easily creases. I have a friend that actually owns a lot of dunks and she is like मत ले, it's actually not worth it. It just easily creases. 4-5 साल पहले मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं अब से कोई भी फुल लेदर वाले या फिर लेदर वाले शूज या फिर स्नीकर्स नहीं लूंगी क्योंकि इजीली क्रीज हो जाता है। आई हैड अ पूमा का स्नीकर, ठीक है, आई पेड फुल प्राइस 6,000 के आसपास मैंने पे करके 6 से 7,000 पे करके मैंने वो लिया था। विद इन 2 और 3 वीक्स इट लिटरली क्रेज्ड, पूरा पैसा बर्बाद हो चुका है। सो इंस्टेड वो फॉर फैब्रिक वाले शूज, जब से मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं फैब्रिक वाले शूज लूंगी, आई एम लाइक वाह, पैसा वसूल वाला डिसीजन, क्योंकि ना ये खराब होते हैं ना क्रीज आते हैं। गंदे होंगे तो मैं आराम से इन्हें धो लूंगी एंड इट विल जस्ट बी लाइक दैट। यू कैन लिटरली वेयर देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इनका शेल्फ लाइफ भी काफी ज्यादा होता है बिकॉज इट्स नॉट लेदर। तो क्रीज नहीं होंगे, फट नहीं जाएगा, तो ऐसे नहीं पड़ा रहेगा। आप आराम से इसे पूरा इसको पूरा का पूरा आप यूज कर सकते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट स्नीकर दैट actually gives a lot of look like dunks, again ये आप नाइकी से ही ले रहे हो, ऐसे नहीं कि आप डंक फेक कुछ ले रहे हो, ये नाइकी का ही है and it looks very similar to the नाइकी का डंक वाला वेरिएंट। तो यार दैट्स इट फॉर today's video and I hope you guys like it। मुझे कहीं से अगर इनका लिंक मुझे कहीं से मिल गया जहाँ भी ये इन स्टॉक है, मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर चेक कर लेना एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।